नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज कार सेशन रे आमे डिस्कशन करबा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पैथोलॉजी ऊपर किछटा क्वेश्चंस एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज रहइबा नर्सिंग ऑफिसर पई बोली जो माने एम करूचंती सेमान को पई बोली क्वाइट हेल्पफुल रहइबा आज रे सेशन ता। तो सही पई बोली समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करंतु एंड आल्सो मेक श्योर कि तमे माने जहाँ सब क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर ता आसुची ता संगे ता मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस आ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ता कोन बनि के आसी परिबो से सब विषय रे मध्ये आज हम डिस्कशन करबा हला। तो आज रो क्लास निहाती भाबे समस्त का पई बोली हेल्पफुल हबो। Yes, so yes, good afternoon everyone. तो स्टार्ट करबा क्लास शेयर कर देले लिंक ठीक। चलो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू gram staining differentiates the bacteria based on the cell wall composition, capsule thickness, flagella number, spore formation. कौन हबो? gram staining differentiates the bacteria based on yes it is cell wall composition. तमे जानि छ बैक्टीरिया होची गोटे कोन ना गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल, गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल जहार कि ऊपर गोटे कैप्सुलेटेड लेयर टे रहिबा संगे तार सेल वॉल मध्ये प्रेजेंट थाउची एंड द सेल वॉल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन हैला। सेल वॉल in the bacteria is made up of peptidoglycan. अब ए जो पेप्टिडोग्लाइकन रे मेड अप ऑफ सेल वॉल रो थिकनेस सेल वॉल ता किते थिक आ किते थिन ता ऊपर डिपेंड करूची, तारी ऊपर डिपेंड करूची केते स्टेन से नहीं परिबा केते से कलर नहीं परिबा ऑब्जर्व। तो थिकनेस और थिननेस ऊपर बैक्टीरिया सेल वॉल रो थिकनेस और थिननेस ऊपर डिपेंड करूची तार स्टेनिंग रो एबिलिटी ता। तो सेल वॉल कंपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। Cell wall composition is the correct answer for this question. Next number, which of the following is a gram negative bacterium? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम कोडा ता माने ग्राम नेगेटिव रो अर्थ होची सीए हमर स्टेन नहीं पारुनी रो अर्थ होची तार सेल वॉल रो थिकनेस ता कम अछि, सेल वॉल एते थिक नाही तार थिन अछि। तो को बैक्टीरिया रो सेल वॉल ता थिन रहउची? yes yes the correct answer for this question is Escherichia coli, E coli जहार कि जे कि होची गोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बाकी सब गुडा को होचंदी हमरो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव हैला। सब गुडा होचंदी ग्राम पॉजिटिव बाकी खाली Escherichia coli होची हमरो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। नेक्स्ट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जोटा कि होची हमरो गोटे प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ता हैला। इट इज अ टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आ ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रे कोन होची ना हमर स्पटम क्रिएट होची, कफ फॉर्मेशन होची, ता संगे रे हमर ब्रीथिंग ब्रेथलेसनेस रो प्रॉब्लम होची, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रो प्रॉब्लम होची, ता संगे रे व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी हेले हाइपोक्सिया कंडीशन होची, हाइपोक्सिया कंडीशन लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स इन आवर बॉडी हैला। तो ए सब जिंस को जदी हमें आखि रे देखिबा आखि आगे रखिबा ताहाले हमर को पॉजिटिव अच्छा फॉर एंड लेट मी टेल यू this tuberculosis is caused by a bacterium, गोटे बैक्टीरिया द्वारा एटा कॉज होची, बैक्टीरिया द्वारा एटा कॉज होची हैला। तो बैक्टीरिया द्वारा जदी कॉज होची तार नारु ही जणा पड़ी जाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैला। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस डिसऑर्डर हैला। अन्य गुडा टिके देखि दबा माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेस लेप्रेसी जोडा को कि हमें
कुष्ठ रोग बोली मध्य कहू हैला Corynebacterium diphtheria it causes diphtheria आउ diphtheria मध्य गोटे प्रकार हमर respiratory tract disorder ता बुझौची Bordetella pertussis ये हमर pertussis करोची आउ pertussis रे हमर common symptom ता कोन ना it is whooping cough it is whooping cough हैला तो ये हे गला हमर सब गुडा करा क्वेश्चन ठीक सब गुडा एक्सप्लेनेशन हे गला गुड आफ्टरनून सुमित्रा गुड आफ्टरनून तो हे गला हमर causative organisms next Zale Nielsen staining is used to identify the gram positive cocci acid fast bacilli fungal spores viral induction bodies viral inclusion bodies yes कौन हो एटा Zale Nielsen staining Zale Nielsen staining एटा हमर generally एटा गोटे acid fast bacilli को आइडेंटिफाई करिया पई बोली यूज हे थाउची acid fast bacilli को आइडेंटिफाई करबा पई बोली यूज हे थाउची हला तो कोन होची एटा exactly it is a specialized acid fast staining method primarily used to identify mycobacterium species like the bacteria causing tuberculosis or leprosy tuberculosis or the leprosy ठीक अछि तो एडी हम करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी option number B for the fourth number question. Next, the most reliable method of the sterilization for the surgical instrument is most reliable method of sterilization for surgical instrument is boiling, autoclaving, chemical disinfection, UV irradiation. कौन होगा? Most reliable method for sterilization करिया ପାଇଁ बोली आमे जनरली आमे ऑटोक्लेविंग यूज करू बैक्टीरिया रो स्टेरिलाइजेशन करिया पई बोली आउ एटा होची हमर गोटे हाई लेवल रो एडा रे माने ऑटोक्लेविंग रे यूज कोन हुए ऑटोक्लेविंग रे हुए कोन एग्जैक्टली एडा यूज करछ ऑटोक्लेविंग रे यूज करछ सैचुरेटेड स्टीम हाई प्रेशर रे सैचुरेटेड स्टीम हाई प्रेशर रे देगी हमें ऑटोक्लेविंग मेथड रे बैक्टीरिया रो स्टेरिलाइजेशन करिया पई बोली यूज करू हैला कोन करू यूजेस saturated steam under high pressure done next autoclaving achieves sterilization at a standard pressure and temperature of हमें जानले कि saturated steam में high pressure रे करूची exactly केते steam दरकार बा केते saturation दरकार केते डिग्री सेल्सियस रे केते टेम्परेचर रे करूची ते जिंसडा एठी क्वेश्चन रे पचारी छी कोन हबो हबो गुड आफ्टरनून सुचिस्मिता B yes 15 lbs per inch square and 121 degree celsius और जदि फारेनहाइट रे हम कन्वर्ट करिबा तो इट विल बिकम 250 फारेनहाइट हैला एडा होची मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑटोक्लेविंग जते बेले हबो ना ए टेम्परेचर रे बा ए जो कंडीशन मेंटेन हेले जाय कि हमरो इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन ता हे परिबो ऑटोक्लेविंग रो मेथड रे जोटा देखि हमें हाई टेम्परेचर रे सैचुरेटेड स्टीम यूज करके बैक्टीरिया रो स्टेरिलाइजेशन करा हैला हाई टेम्परेचर रे सैचुरेटेड स्टीम रे हमें ए स्टेरिलाइजेशन ता कराओ कहारो करेबा स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरिया रो स्टेरिलाइजेशन करेबा नेक्स्ट which organism is responsible for causing the cholera yes yes
कॉलेरा कॉलेरा होची गोटे हमर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डा and it is caused by it is caused by the केमिति cause होची or it is spread by the हला caused by the or it is spread by the contaminated food and water contaminated food और water रे हमर spread होची cholera disorder टा आउ cholera रे हमर कोन होची ना digestive system is affected and it is also associated with diarrhea डायरिया हम जहाद्वारा कि तुम मानकर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी रो इलेक्ट्रोलाइट टा इम्बैलेंस हो जिवो एंड एटा जो हमर कॉज होची एटा विब्रियो कॉलेरा रो कॉज होची विब्रियो कॉलेरा रो कॉज होची एटा हला तार पॉजिटिव एजेंट हला एटा हला तार पॉजिटिव एजेंट एटा मध्ये गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे हमर पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करिथिला एंटायर ऑल ओवर द वर्ल्ड नेक्स्ट द causative agent for the typhoid fever typhoid fever ପାଇଁ ବୋଲି causative agent is the most simplest question I would ever know salmonella typhi escherichia coli klebsiella pneumoniae proteus mirabilis कौन हला typhoid fever again typhoid it is caused by bacteria तो ये हे गेला गोटे हमर bacterial borne disease ठीक अछि caused by salmonella typhi salmonella typhi रो एटा कॉज देथिला जदी आमे आरो डायग्नोसिस कथा कहबा डायग्नोसिस पई बोली आरो गोटे स्पेसिफिक टेस्ट मध्ये अछि से डायग्नोसिस पई बोली जो स्पेसिफिक टेस्ट अछि से स्पेसिफिक टेस्ट रा ना हैला वाइडल टेस्ट ठीक अछि तो वाइडल टेस्ट हे गला एडा हमर तार डायग्नोसिस ता जते बेले एडा स्प्रेड हेतिला ना जने कैरियर थिले शी वाज द लेडी and she carried the typhoid bacteria hela typhoid bacteriapai boli se carrier thile due to her unhygienic condition unhygienic maintenance of the hands वगैरह सब से proper hygiene maintain न करबा जो ताकटो ही हमर ए जो टाइफॉइड फीवर रो जो ट्रेंड टा बा बैक्टीरिया टा हमर जनरेट हे गिरी से हमर ऑल ओवर द माने ऑल ओवर द ग्लोब सेडा स्प्रेड हे गला धीरे 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 हे गिरी हला एंड शी वाज नन अदर देन मैरी मेलॉन एंड जेहेतु शी वाज द carrier for typhoid bacteria ठीक अछि टाइफॉइड बैक्टीरिया रो कैरियर थिले आ सेति पे बोली ताको नाम मते चेंज हे कि हम टाइफॉइड मैरी बोली रखि देले टाइफॉइड मैरी बोली रखि देले आरो सिम्पटम गुडा कोन कोन आसीबो टाइफॉइड फीवर रो जनरल सिम्पटम्स गुडा कोन कोन आसी पारे जेमिति कि हमर आसी जिवो हाई फीवर हाई किंतु periodic fever associated with stomachache body pain headache ठीक अछि ए सब जिंस हमर देखा जिवो ठीक बारंबार ज्वर आसुथबो आ ज्वरटा जो आसीबो ना परसिस्टेंट रहिबो माने टिके समय पे बोले परसिस्टेंट रहिबो तापर पूरा भलो होई जिवो ए जो पीरियडिकली फीवरटा हमर आसी थाउची जाई थाउची से जिंसडा हमर गोटे टाइफॉइड सिम्पटम को दर्शाउची आउ जदि देखिबा सी अफेक्ट काहाको करे सी मेनली अफेक्ट करिवो मेनली इन्फेक्ट्स our GI tract the bacteria resides in the small intestine small intestine रे reside करछथि से माने सेइठो हमर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऊपर फीड करिक से माने सेइठो न्यूट्रिशन नै जिबा चेष्टा करंती एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच बॉडी बिकम्स वीक हला बॉडी बिकम्स वीक तो एठी हमें न लिखि की एठी कोन लिखि परिबा ना हमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे हमर रिसाइड करूछंती can cause perforations in the small intestine under severe conditions ठीक अछि
तो सिवियर कंडीशंस रे से पोर्स परफोरेशंस से कज कर है एज अ रिजल्ट ऑफ विच जहाँ तुम खाइब तुम देह ही लगे सब बैक्टेरिया गुड़ाक ही खाई ही बचे ठीक अच्छे एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉडी वीक होगा आरंभ है तो ये हो गला गोटे नेक्स्ट tetanus is caused by a toxin produced by clostridium tetani clostridium botulinum clostridium perfringens bacillus anthracis very obvious question very obvious yes hmm. tetanus tetanus hmm. clostridium tetani is the causative agent है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी इज द पॉजिटिव एजेंट आपको प्रिवेंट करिया पई बोली आमे कोटे वैक्सीन देनु से वैक्सीन रो ना हैला डीपीटी वैक्सीन हैला आ सेडा नॉट ओनली हमरो टेटानस अगेंस्ट रे हमको प्रोटेक्शन दोची बट आल्सो आउ दीटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगेंस्ट रे मध्ये हम बॉडी को प्रोटेक्शन दोची कोन कोन से दीटा कहि देलो के कहि परिबो डीपीटी वैक्सीन provides protection against 3 bacterial infections those are कौन कौन D for diphtheria P for pertussis और T for tetanus है ना डिप्थेरिया पर्टोसिस और टिटानस है तीनटा जाक बैक्टीरियल डिजीज रो अगेंस्ट हमर गोटे ही वैक्सीन काम करे सी हैला डीपीटी वैक्सीन नेक्स्ट which culture medium is used specifically for the growth of the mycobacterium tuberculosis को मीडियम रे आमे mycobacterium tuberculosis को पूरा इफेक्टिवली ग्रो करे परिबा it is Lowenstein Jensen medium है ना Lowenstein Jensen medium जोटा कि गोटे एग बेस्ड मीडियम दा egg based medium है done growth of mycobacterium tuberculosis as a bacteria से हमरो किछि गोटे तो डिजीज निहाती क्रिएट माने निहाती से करौथबो ही हैला आ जेमिति कि नारु ही जानि परछो mycobacterium tuberculosis it causes tuberculosis which is a respiratory infection respiratory tract disorder जोड़ा कि हम mycobacterium tuberculosis जोकु देखा जाउछ हैला mycobacterium tuberculosis जोगु देखा जाउछ next the most common causative organism of the urinary tract infection is it is Escherichia coli although ଆମର most of the bacteria एडा जो हमर जो good bacteria gut bacteria बोली हमें जो कहूचे एडा हमर gut रे present अछि जे कि हमर digestion में हम metabolism को speed up करूची but 80 to 85% of the Escherichia coli is responsible for the acquired urinary tract infections हैला कोन 80 to 85% of the Escherichia coli is responsible for the acquired or adaptive urinary tract infections ठीक अछि urinary tract infections या फिर हम आपको कौन कहूचे UTIs urinary tract infections को UTIs बोली मध्य कहा जाउछि हैला Escherichia coli correct answer next hepatitis B virus is primarily transmitted through fecal oral route blood and body fluids air droplets contaminated food कौन होबो hepatitis B virus is primarily transmitted through fecal oral route blood and body fluids airborne droplets contaminated food it is
ब्लड एंड बॉडी फ्लुइड्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लुइड्स। ठीक अच्छे बी बी यस सुचित्रा। आउ जोटा को कि हेपाटाइटिस बी वायरस हमर कोन कॉज करूची कहना कॉज कोन करूची हेपाटाइटिस कॉज करूची ठीक अछि हेपाटाइटिस कॉज करूची हेपाटाइटिस बी कॉज करूची जोटा कि गोटे एसटीडी टा एसटीडी माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज sexually transmitted disease gote ठीक अछि and there are 3 such STIs or STDs तीनटा एमिति STD अछि जोटा कि incurable which are incurable कोन से तीनटा STD कहलो देखिबा तीनटा STD कोन जो तीनटा STD कि हमर incurable तार क्योर नहीं कोठी से क्योर ही हे परिबनी सेटा होची हमर कोन तीनिटा गोटे हला herpes virus which causes genital herpes आ गोटे हला hepatitis B virus जे कि हमर hepatitis B cause करूचे आ गोटे हला HIV virus जे कि एड्स कॉज करूचे ए तीनटा एसटीडी होची हमर इनक्यूरेबल ए तीनटा एसटीडी होची हमर इनक्यूरेबल तार क्योर नहीं होठी ठीक नेक्स्ट which hepatitis virus is transmitted through the fecal oral route जति hepatitis B टा होची हमर बॉडी एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स रो ट्रांसमिट होची ताले fecal oral route रो हमर को hepatitis टा ट्रांसमिट होची it is beta hepatitis A hepatitis A टा ही केवल हमर fecal oral route रो ट्रांसमिट होची बाकी ये तीनटा जगह होचंदी हमर ब्लड बॉर्न ब्लड रूट रे ये ट्रांसमिट हबा बा बॉडी फ्लूइड्स रूट रे ट्रांसमिट हबा नेक्स्ट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इन द ह्यूमन बिलोंग टू द जीनस प्लाज्मोडियम एंटामोeba ट्रिपैनोसोमा लेशमेनिया कहो कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया जो कॉजेटिव एजेंट सेटा होची गोटे प्रोटोजोआ ठीक अछि मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ से जो प्रोटोजोआ कोन सेटा होची गोटे सेटा होची प्लाज्मोडियम आ प्लाज्मोडियम होची जीनस टा प्लाज्मोडियम रे पुनी चारिटा स्पीशीज अछि कोन कोन गोटे होची प्लाज्मोडियम वाइवैक्स गोटे हला प्लाज्मोडियम मैलेरी गोटे हला प्लाज्मोडियम ओवेल आ गोटे हला प्लाज्मोडियम फाल्सिपार आ गोटे मते रिसेंटली डिस्कवर हेची गोटे प्लाज्मोडियम रे गोटे स्ट्रेन रे सी हला प्लाज्मोडियम नोलेसी प्लाज्मोडियम नोलेसी ठीक अछि आ प्लाज्मोडियम टा हमर गोटे प्रोटोजोआन पैरासाइट बोली कहा जाउचे आउ ये आपको डाइजेनेटिक होस्ट दरकार दीटा होस्ट दरकार तार लाइफ साइकिल को कंप्लीट करबा पई बोली दीटा होस्ट दरकार हैला जहा को कि से भीतर गोटे हे जिबा हमर किए गोटे हे जिबा हमर प्राइमरी या फिर ताको डेफिनेटिव होस्ट बोली मते कहा जाउची आ गोटे हैला सेकेंडरी बा इंटरमीडिएट होस्ट बोली मथे कहा जाउची इंटरमीडिएट होस्ट बोली मथे एडा को कहा जाय परबो हैला प्राइमरी होस्ट केते बेले कहा जिवो प्राइमरी होस्ट हम सेते बेले कहबा जते बेले प्लाज्मोडियम रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहा बॉडी रे होतबो से बॉडीटा से जो ऑर्गेनिज्म रो बॉडीटा सेटा हि जिवो हम पई बोली प्राइमरी होस्ट तो प्राइमरी होस्ट हम केते बेले डिफाइन करि परबा जते बेले वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place आउ जोडी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतबो सेटा हि जिवो सेकेंडरी होस्ट करेक्ट वेयर asexual reproduction takes place तो आमे जानि छे जे प्लाज्मोडियम जो डाइजेनेटिक होस्ट जो दरकार पड़ुची बोली आमे कहूचे से डाइजेनेटिक होस्ट किए किए अछि गोटे हला फीमेल एनोफिलिस मस्किटो
आ गोटे हैला ह्यूमन ठीक अच्छे ह्यूमन मान बॉडी रे होची एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बोली ह्यूमन ही जिबे हमर सेकेंडरी होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम आउ फीमेल एनोफिलस मस्किटो रो बॉडी रे हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची सेति पे बोली प्राइमरी होस्ट से माने ही जिबे ये हे गला हमर फीमेल एनोफिलस मस्किटो फीमेल एनोफिलस मस्किटो डन करेक्ट पूरा सब विषय हे गला हमर जदि आमे मलेरिया रो किछि मेडिसिन कथा मते हेबा सेटा मते टिके हे जिबा मलेरिया पे बोली गोटे हमर मोस्ट नोन मेडिसिन अछि जोटा कि हमर बार्क ऑफ द सिंसोना ट्री रु डिराइव करा जाउची कोन करा जाउची इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द bark of cinchona tree आउ सेटा कोन क्विनोन क्विनोन या फिर ताको क्लोरोक्विन बोली मध्य कहा जाउची क्लोरोक्विन बोली मध्य कहा जाउची करेक्ट हे गला तो सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द मलेरिया इज डन ओवर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेस सिवियर फॉर्म ऑफ द मलेरिया जो चारटा पांचटा फॉर्म ऑफ मलेरिया मु कहिली बा प्लाज्मोडियम कहिली जे कि मलेरिया कॉज करे पारुची से हिरो सब सिवियर बा सब फेटल फॉर्म होची हमर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम ये हमर ब्रेन मलेरिया बा सेरेब्रल मलेरिया कॉज करूची ब्रेन मलेरिया बा सेरेब्रल मलेरिया कॉज करूची नेक्स्ट Entamoeba histolytica primarily causes the infections of the lungs, large intestine, liver only, kidneys. Yes. कौन होची एंटामेबा हिस्टोलिटिका हमर कौन कॉज करूची या हमर एमेबाइसिस कॉज करे या फिर एटा को हमर एमेबिक डिसेंट्री बोली मध्य को एमेबिक डिसेंट्री बोली मध्य हमें कहि परिबा हैला सेटा रे हमर लार्ज इंटेस्टाइन को ये प्राइमरीली इन्फेक्शन करूची आउ सीवियर फॉर्म रे इन मोस्ट सीवियर केसेस it can cause abscess in the colon area of large intestine. Large intestine रो तीनटा पार्ट अछि ना सिक्कम कोलोन और रेक्टम से सिक्कम कोलोन और रेक्टम भितरे कोलोन पोर्शन टा होची तार प्राइमरी इन्फेक्शन रो साइट प्राइमरी इन्फेक्शन रो साइट टा 80 से प्राइमरीली इन्फेक्शन टा कॉज करोछि नेक्स्ट the vector responsible for the transmission of the dengue fever डेंगू फीवर मलेरिया और डेंगू भितर हमर डिफरेंस टा बहुत अधिका कोन अधिका मलेरिया होची गोटे प्रोटोजोआ माने मलेरिया जे कॉज करची से होची गोटे प्रोटोजोआन टा आउ डेंगू जे कॉज करची सी हला गोटे वायरस कॉज करूची आउ डेंगू पई बोली जो वेक्टर टा दरकार सी अलगा थाए आउ मलेरिया पई बोली जो वेक्टर टा दरकार सेटा भी अलगा थाए तो जदि देखिबा डेंगू फीवर पई बोली स्प्रेड करिया पई बोली जो वेक्टर अछि सी हला हमर एडिस इजिप्टी मस्किटो एंड इट इज ऑब्वियसली फीमेल एडिस इजिप्टी मस्किटो या हमर स्प्रेड करूची डेंगू फीवर को while मलेरिया कोन करथुला मलेरिया वाज स्प्रेड बाय एनोफिलस मस्किटो ठीक अछि तो एडा हे गेला हमर मेजर डिफरेंस आ गोटे कोन डिफरेंस ना डेंगू टा हमर वायरल वायरस टा आ एडा हमर प्रोटोजोआ हैला तो ए हबो सी यस सुपना ठीक अछि सी एडिस इजिप्टी मस्किटो rabies virus is transmitted to the humans mainly through contaminated water bite of an infected animal airborne droplets blood transfusion rabies एडा हमर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल रु एडा स्प्रेड होची बाकी रेबीज टा होची गोटे वायरस टा हैला गोटे वायरस टा से वायरस टा जे कि गोटे एनिमल को इन्फेक्ट करि थाउची ग्रेजुअली कोन होची सेटा जते बेले से तार बाइट टा से बाइट करू या फिर स्क्रैच भी करू से जदी से पार्टिकल एटा तम बॉडी फ्लूइड रे ट्रांसफर हे गला देन द वायरस विल बी ट्रांसफर्ड टू यू एज वेल हैला बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड
animal. Here will be the correct answer. Our major symptom da kono? Major symptom hochi hydrophobia. पानी को देखिले हैला पानी को देखिले डरिवो आ पानी को देखिले डरिवो बोली कहले ग्रेजुअली हबो कोन बॉडी तापरे डिहाइड्रेटेड हेबा आरंभ होई जिवो डिहाइड्रेटेड हेबा आरंभ होई जिवो हैला डिहाइड्रेटेड हेबा आरंभ होई गले तापरे बॉडी धीरे धीरे हमरो डेथ आडो को लीड करिवो हां डेथ आडो को लीड करिवो यस मोनालिसा हाइड्रोफोबिया नेक्स्ट which of the following is a fungal infection of the skin fungal infection of the skin scabies or tinea pediculus leishmaniasis कौन होगा fungal infection of the skin yes we yes ringworm आता causative agents गुड़ा कौन causative agents गुड़ा कौन हेबे ना microsporum epidermophyton ଆଉ trichophyton microsporum epidermophyton और trichophyton एतिसिगिरे हमर कॉज करे परचंदी कोन ना ringworm which is a fungal infection next candida albicans commonly causes the infection of the oral cavity and mucous membrane bone marrow cardiac valves peripheral nerves candida albicans जे कि हमर candidiasis हमर कॉज करूची oral cavity and mucous membrane रा हमर infection से कॉज करे oral cavity and mucous membranes हैला next HIV primarily attacks which cell of the immune system which cell of the immune system हमर HIV जहार की फुल फॉर्म हैला कोन human immuno deficiency virus human immunodeficiency virus हैला जोड़ा कि हमर कोन करची A स्वप्ना A हबो B lymphocytes B हबो yes शुभश्री ठीक अछि CD4 T lymphocytes हैला T lymphocytes और पर्टिकुलरली जदी कहबा ताहले T helper cells रो प्रोडक्शन को सी लोअर डाउन कर दोची T helper cell एक्चुअली करूथला काम B सेल रो एक्टिवेशन करूथला B सेल रो एक्टिवेशन करूथला तो T helper cell रो प्रोडक्शन जत लो हे जबो तो B सेल रो एक्टिवेशन भी हे परिबनी B सेल एक्टिवेशन न हेले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हबनी कि हमरो इम्यूनिटी मध्ये डेवलप हबो नाही इम्यूनिटी भी डेवलप हबो नाही हैला तो सब गुडा हमरा लिंक्ड हेगिरि थाए हैला तो ये सब जिंस हमर एठी देखा जाउछ CD4 T lymphocytes next which of the following best defines the inflammation कोन हबो inflammation माने हो जे फुली जिबा जे कोनोसी जगह रे जदी हमर स्वेलिंग हे जाउची सेटा को हमें inflammation बा inflamed area बोली हमें कहउचे तो से inflammation दा हमर केते बेले होउची inflammation दा हमर केते बेले होउची B yes very good the body's protective response to the injury body मध्ये गोटे हमर immune cell अछि जे कि हमको कोनोसी भी पैथोजन रो अगेंस्ट हम बॉडी को प्रोटेक्शन दोची हैला तो बॉडी रो जो वे मेकैनिज्म ता कोनोसी भी इंजुरी अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करिया पई बोली सेटा होची इन्फ्लेमेशन होची वन ऑफ इट्स रेस्पॉन्सेस हैला इन्फ्लेमेशन होची वन ऑफ इट्स रेस्पॉन्सेस वेरी गुड ठीक अछि नेक्स्ट the cardinal signs of acute inflammation include all of the following except redness heat pallor swelling inflammation hella बोली कहले inflammation संगे रे हमर swelling भी हबो फुल्लीबो मध्ये आ फुल्लीबार को हमर ब्लड सेल्स गुडा को मध्ये नुवा नुवा जो फॉर्मेशन होउचंदी इन्फ्लेमेशन एरिया को रश करबा जगह रे सेते बेले हमर हीट मध्ये जनरेट होउची आ जेहेतु ब्लड सेल्स गुडा को रश करचंदी तो रेडनेस मध्ये हमर देखा जाउची तो रेडनेस देखा जिवो हीट देखा जिवो स्वेलिंग देखा जिवो पार्लर से जगह रे देखा जिवो नाही हैला से जगह रे से देखा जिवो नाही यस सी ही जिवो इट करेक्ट आंसर मोनालिसा
सुचित्रा ठीक अच्छे पार्लर है आमर एक्सेप्ट पचार ठीक नेक्स्ट which type of necrosis is characteristically seen in tuberculosis coagulative necrosis liquefactive necrosis caseous necrosis fat necrosis कौन हबो which type of necrosis is characterized by characteristically seen in tuberculosis जोड़ा कि गोटे respiratory tract infection टा जोड़ा रे कि हमर सेल रो डेथ हो जाए तो सेल रो डेथ जो हो जे सेटा एसोसिएट होची हमर tuberculosis रो caseous necrosis संगे हैला caseous necrosis संगे next a blood clot that travels from its site of formation and lodges in a distant vessel is called thrombus, embolus, in fact, aneurysm. माने क्लॉट गोटे जगह रे हैला तापर गोटे जगह रे आ गोटे जगह को जाई से लॉज हे से फॉर्म करला कोन हैला सेटा yes it is embolus हैला embolus thrombus रो माने कोन ताले thrombus रो माने कोन thrombus रो माने होची जते बेले blood clot that remains stationary at its site of formation जो जगह रे फॉर्म हैला से जगह रे ही से रहिला से कोडी ट्रैवल करलानी इनफैक्ट माने कोन it is the resulting area of tissue death from lack of blood supply माने को जगह रे जदी lack of blood supply को जगह रे जदी तमे टिके जोरे धाकाटा बांधी देइछो जोरे कसी के भिड़ी देइछो से जगह रे हमर ब्लड सप्लाई टा कम हबो से ब्लड सप्लाई कम हेबा जगु से जगह रो जो टिश्यू उडा को मरि जाउछंती से जिंसटा को हमर इनफैक्ट बोली कहै जाउछ एन्युरिज्म रो माने कोन एन्युरिज्म रो माने हैला इट इज अ bulge in a blood vessel wall ठीक अछि हैला तो बुझी पारलो एडी कोन हैला एम्बोलस रो माने हैला क्लॉट गोटे जगह फॉर्मेशन हैला किंतु आ गोटे जगह को जाके ट्रैवल करके सेट जाके लॉज हे रहला थ्रोम्बस रो माने जो जगह से फॉर्मेशन हेची से जगह से स्टेशनरी हे रहला अंटिल से क्लॉट रिजॉल्व हो जाय से जगह ही फिक्स हे रहला इनफैक्ट माने कोन किछि जोटे जगह जदी तमे के कस्ती की भिड़ी देइछो हैला कस्ती की भिड़ी दबो जदी बोली कहले ब्लड रो सर्कुलेशन मानकर मुई गोटे थाकेडे बहुत जोरे कस्ती की भिड़ी देइछि हैला मोर ब्लड सर्कुलेशन ना मोर ए जगह को कमी जीवो ना ए जगह को ब्लड सप्लाई कमी गला कहले ए जगह रे मोर टिश्यू उडा कर डेथ हे जाउची टिश्यू डेथ हे गला सेठी मते एडी मोर एडा मते गोटे क्लॉट बा जो टिश्यू डेथ हे जाउची हैला तो एडा को इनफैक्ट बोली कहा जाउची एन्युरिज्म रो माने हैला गोटे बल्ज ब्लड वेसल रो कोनोसी भी इंटरनली ब्लड वेसल रो कोनोसी गोटे वाल रे जदी हमर किछि इन्फ्लेमेशन हो जाउछि किछि बल्ज हो जाउछि से कंडीशन ता हम एन्युरिज्म बोली कहा जाउछि नेक्स्ट death of the tissue due to inadequate blood supply is termed as necrosis infection gangrene atrophy एडा एबे जस्ट पूर्व जो डिस्कशन करथिले सेही इन्फेक्शन हो हैला इन्फेक्शन हो नेक्रोसिस माने कोन दिस इज अ जनरल टर्म used for cell death used to माने सेल डेथ को बुझेबा पई बोले हम ए टर्म टा को यूज कर हला नेक्स्ट गैंग्रीन रो माने कोन एबे गैंग्रीन रो माने होची द सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नेक्रोसिस सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोसिस देन एबे आसा एट्रोपी रो माने कोन एट्रोपी रो माने होची द वेस्टिंग अवे और द श्रिंकिंग ऑफ द टिश्यूज श्रिंक हो जाउची टिश्यू या फिर टिश्यू उडा को कोनोसी भी कारण रो जदी वेस्ट हो जाउची बिकॉज़ ऑफ मेनी मल्टीपल रीजंस जोठी की हमर कोन हे परिबो ब्लड सप्लाई एडिक्वेट हे परिबोनी या फिर ऑक्सीजन रिच जगह को ठीक से पहुंची परिबोनी मेनी रीजन हे पारे हैला तो एट्रोपी रो माने होची द वेस्टिंग अवे or the wasting away or the shedding away or the shrinking of the
tissues. Next, which type of hypersensitivity reaction is responsible for anaphylaxis? Anaphylaxis. Which type of hypersensitivity reaction is responsible for the anaphylaxis? It is type 1, जे कि आमर IgE mediated hypersensitivity reaction देखौछ हला. Next, a benign tumor is arising from the glandular epithelium is called carcinoma, sarcoma, adenoma, lymphoma. Benign tumor arising from the glandular epithelium. Glandular epithelium पचाजी. Glandular रो माने हला adeno. Adeno रो माने हला glands. तो glandular epithelium रो जदि हमरो benign tumor release होची ताले एटा हम adenoma हे जिवो. Lymphoma होची हमरो tumor of the lymphatic vessels. आउ कार्सिनोमा आउ सार्कोमा एडा सब हमरो malignant tumor. Malignant tumor रो केस उडा हला. तो benign tumor कथा पचाजी तो ए दिरा तो हबो. Next, malignant tumor of connective tissue origin are called. Malignant tumor of the connective tissue origin are called. Connective tissue origin. Connective tissue आमर origin दा कोन connective tissue रो? Connective tissue रो origin दा कोन? It is mesodermal in origin. Correct. It is mesodermal in origin. ठीक अछि. तो here the correct answer will be sarcomas. जतबे epithelial tissue रो cancer होउची सेडा हमर carcinoma से जिवो. आउ adenoma papilloma सेडा सब हमर benign tumor रो cases. Next, the spread of the malignant cell to distant sites through the blood or lymph is known as. गोटे जगह रो सेल जते बेले जो ट्यूमर सेल उडा जते गोटे जगह रे कन्फाइंड हे कि लोकलाइज हे कि रहउछन सेटा हमें बेनाइन ट्यूमर बोली कहले. जते बेले गोटे जगह रो से कंडीशन टा को हमरा मैलिग्नेंट ट्यूमर रो केस बोली कहउचे जोटा कि होउची गोटे सिवियर फॉर्म ऑफ द ट्यूमर. सिवियर फॉर्म ऑफ द ट्यूमर. ठीक अछि. जोटा कि हमरो ट्रीट करबाटा टिके कष्टकर हैला. तो सेही प्रॉपर्टी टा को हमरो मेटास्टैसिस बोली कहआ जाउची. कोन कहआ होउची? मेटास्टैसिस बोली कहआ वाला. नेक्स्ट, which of the following best describes the edema? Accumulation of pus in a cavity, accumulation of fluid in the interstitial tissue spaces, excess blood clot formation, reduced blood cell count. कौन हबो आंसर? कौन है बेडी? सुचित्रा, शुभश्री, यस सुचित्रा, सागरिका, बी स्वप्ना. Accumulation of fluid in the interstitial tissue spaces. Accumulation of fluid in the interstitial tissue spaces. Accumulation of pus in a cavity. ए कंडीशन टा कोन कहआ जाउची? ए कंडीशन टा को कहआ जाउची हमरो कोन कहउ जंती सेटा एब्सेस. ए बी एस सी ई एस एस और एम्पाइमा. हां ठीक अछि. एम्पीमा. देन excessive blood clot formation रो कंडीशन टा हमरा कहआ जाउची thrombosis. आउ blood cell count reduced रो कंडीशन टा हमरा कहआ जाउची cytopenia. Cytopenia. करेक्ट. तो जतो बळे ब्लड सेल तो हमरा गुडाई प्रकार अछि ना. तो आरबीसी रो काउंट कमिले कोन कहआ जाउची, डब्ल्यूबीसी रो काउंट कमिले कोन कहआ जाउची, प्लेटलेट रो काउंट कमिले कोन कहआ जाउची. सब गुडा कोन कहआ जाउची? आरबीसी रो काउंट कमिले से कंडीशन टा कहआ जाउची एरिथ्रो साइटोपेनिया. डब्ल्यूबीसी कमिले कम कहआ जाउची ल्यूकोसाइटोपेनिया. प्लेटलेट कमिले कहआ जाउची सेडा होची थ्रोम्बोसाइटोपेनिया.
तो ये सब साइटोपेनिया कंडीशंस गुड़ा जଣା जाଉଛି. Next, the erythrocyte sedimentation rate ESR is typically elevated in the polycythemia, chronic infectious and inflammation, sickle cell disease, dehydration. RBC is erythrocytopenia. Yes. Abscess. ठीक ଅଛି. Question number 32 करो. B, yes, chronic infectious and inflammation. Chronic infectious and inflammation ए कंडीशन रे हमर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ता बढ़ी जाउची. ESR वैल्यू ता बढ़ी जाउची जोटा कि हम धीरे धीरे इओसिनोफिल काउंट मध्ये बढ़ौची व्हिच इज द ग्रैन्युलोसाइट फाउंड इन द WBC. आ द्वारा होची कोन ना हमर बॉडी रे इम्यून सेल्स गुडा बढ़िले तार गोटे हमर इंडिकेशन मिले जे बॉडी रे किछि ना किछि इन्फेक्शन हेछि है ना. Next, which immunoglobulin is first to be produced in the primary immune response? Primary immune response केतेबेले जनरेट होची जेतेबेले हम बॉडी रे कोनसी गोटे पैथोजन फर्स्ट टाइम टाइम बोली एनकाउंटर करूची. When the pathogen encounters the body for the first time, ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ନା ପ୍ରାଇମରୀ ଇମ୍ୟୁନ ରେସ୍ପନ୍ସ. ସେ ଟାଇମ ରେ ଆମର IgM ଆଣ୍ଟିବଡି ଟା ପ୍ରୋड्यूस होची. एंटीबॉडी बा इम्यूनोग्लोबुलिन जोटा कि हमर गोटे प्रोटीनिशियस वाई शेप्ड मॉलिक्यूल गुडाको प्रोटीन बेस्ड वाई शेप्ड मॉलिक्यूल गुडाको आईजीएम रो स्ट्रक्चर जदि देखिबा एटा होची सबुर लार्जेस्ट एंटीबॉडी हमर कहा जाय. एटा होची सबुर लार्जेस्ट एंटीबॉडी. काहेकि लार्जेस्ट काहे ना एटा पेंटामेरिक फॉर्म रे प्रेजेंट है. पेंटामेरिक फॉर्म रे प्रेजेंट है हैला. तो पेंटामेरिक फॉर्म ता केमितिया ए टाइप रो डाइसल्फाइड ब्रिजेस रे अटैच हेगिरि थाए. तो पांचटा एरा पेंटामेरिक फॉर्म दा IgM antibody. Then next, which immunoglobulin process the placenta to provide the passive immunity to the fetus? Passive immunity रो माने कोन जानछ ना immunity जोटा कि हमकु रेडीमेड एंटीबॉडी रो मिल जाउछ. हम बॉडी निजे एंटीबॉडी किछ प्रोड्यूस करिया कष्ट पडुनी. हमें कोन करछे मानकर हमकु कोविड हेइथिला थारे. कोविड हमकु थारे इन्फेक्शन हेइ जाइथिला. मो बॉडी रे थारे कोविड हेइ किरी मो बॉडी रे ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हेइ जाउछ. एबे गोटे इमितिया इंडिविजुअल ले जाहाको केबे भी लाइफ टाइम रे कोविड हेइनी ताकू जदि इन्फेक्शन करि दोजे ताहाले ता बॉडी एते जदि इम्यूनिटी तार एते बिल्डअप नाही सी संगे संगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करि कि निज बॉडी को प्रोटेक्शन न दे परिबो. मु कोन करबी मो प्लाज्मा रु एंटीबॉडी कलेक्ट करि गिरी से जो इंडिविजुअल को प्रोवाइड करि दे परिबी जे कि डायरेक्टली ताकू संगे संगे से कोविड अगेंस्ट ताकू प्रोटेक्शन दबो. त रेडीमेड एंटीबॉडी जतबे हम एडमिनिस्टर करूचे नक्सिबी बॉडी रे सेही कंडीशन ताकू हम पैसिव इम्यूनिटी बोली कहै जाउची. तो पैसिव इम्यूनिटी कोन ना रेडीमेड एंटीबॉडीज are directly administered to the individual. ये हमरो दी प्रकार हे पारे. नेचुरल भी हे पारे, आर्टिफिशियल भी हे पारे. नेचुरल को केस रे कहबा जते बेले IgG एंटीबॉडी जोटा कि मदर टू फीटस ट्रैवल करूची थ्रू प्लासेंटा. आ गोटे कोन अछि IgA एंटीबॉडी जोटा कि हमर कोलोस्ट्रम रे देखा जाउची मदर्स व्हिच इज द मदर्स फर्स्ट मिल्क हैला. एटा डायरेक्टली एंटीबॉडी गुडा को मदर रु डायरेक्टली छुआ को मिली गला. आर्टिफिशियल कोन एंटी वेनम इंजेक्शंस एडा को सब हे गेला हमर कोन ना पैसिव इम्यूनिटी हैला. IG which immunoglobulin process the placenta to provide the passive immunity? It is IgG. अब IgG रा होची सबुठ स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी मोनोमेरिक फॉर्म रे प्रेजेंट है. एमिति मन रखि परिबो ना प्लासेंटा क्रॉस करि जाउची माने एटा ही स्मॉलेस्ट ही जिवो हैला.
Yes, Sagarika, ठीक अछि. Next. The BCG vaccine provide immunity against tetanus, tuberculosis, diphtheria, pertussis. BCG vaccine. Hmm. It provide protection against tuberculosis. है BCG vaccine रो full form है Bacillus calamity urine. है tuberculosis against protection dose. Next. Which type of immunity is acquired by administration of a vaccine? वैक्सीन जतबेले आमे बॉडी रे एडमिनिस्टर करूचे ता माने बॉडी रे आमे पैथोजेन को डेड फॉर्म रे हो या फिर एटेन्युएटेड फॉर्म रे हो. एटेन्युएटेड रो माने होची ताको आमे ता मेटाबॉलिज्म ताको बंद कर देकी बॉडी भीतर को एडमिनिस्टर करे हैला. बॉडी भीतर को एडमिनिस्टर करे बार अर्थ होची बॉडी रो इम्यून सेल गुडा एक्टिवेट हेबे सो दैट इम्यून सेल्स रो डिवीजन हेगी हम बॉडी रे इम्यूनिटी मिलिबो. हमको इम्यूनिटी मिलिबो से पर्टिकुलर पैथोजेन अगेंस्ट फाइट करिया पई बोली से जो कंडीशन को एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाए. एक्टिव इम्यूनिटी माने होची जतबेले हम रेडीमेड एंटीबॉडी न देगी हम बॉडी को अलाउ करछे निजे निजर इम्यून सेल प्रोडक्शन निजे करू बोली हैला. तो मते एबे ज्वर खास ठंडा हैला कोनसे बैक्टीरिया मते इन्फेक्शन करला बोली कहले सेडा हैला मोर नेचुरल इम्यूनिटी. किंतु जतबेले म जानि सुनि कि गोटे पैथोजेन बॉडी भीतर को एडमिनिस्टर करूची ता माने कोन आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करूची काहे करूची एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो बोली करूची है एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो बोली करूची. तो एंटीबॉडी मोर प्रोड्यूस होची किंतु आर्टिफिशियली होची सेति बोली एडा हेगला कोन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. बी. यस मधु. Biomedical waste containing human anatomical waste should be segregated in a bag of which color? Should be segregated in a bag of which color? Black, yellow, red, blue and white. B. Sagarika. Yellow? Yes. Yellow. Containing human anatomical waste. Human ro waste, anatomical waste, जेतेबेले आमे segregate करूचे yellow color bag रे collect करूचे. Next. Which of the following organism is responsible for amoebic dysentery? Amoebic dysentery माने जोटा कि हमर amoebiasis cause होची. amoebiasis cause होची आ एडा हमर केमिति cause होची by entamoeba histolytica. Very good. entamoeba histolytica. ठीक अछि. आउ गियार्डिया लिम्बाडिया गियार्डिया लैंगलिया ठीक अछि. ये हमर कॉज करछि गियार्डियासिस. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कॉज करछि एस्केरियासिस. आउ ट्रिकोमोनास वाजिनालिस कॉज करछि ट्रिकोमोनियासिस. Next. The most common intestinal parasite causing anemia due to blood loss is called Ascaris lumbricoides, Encyclostoma duodenale, hookworm, Enterobius vermicularis, Taenia solium. Anemia cause करूची intestinal parasite टा. Intestinal parasite टा जदि ताहले सी हैला Encyclostoma duodenale और hookworm. Common name हैला hookworm. को phylum को belong करूची. It belongs to the phylum Aschelminthes. Aschelminthes जोड़ा को कि हमें nematodes बोली मते कहूची. Nematodes बोली मते कहूची. Next. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Corynebacterium diphtheria. Leprosy. Leprosy रा first रे तो हमर bacterial, viral, protozoan ना fungal disorder. First रे कहिलो. Leprosy रा हमर bacterial, viral, fungal ना protozoan. Yes. Bacterial? हाँ ठीक अच्छे. Subhashri, Augustine, very good. It is bacterial. Bacterial. आउ जानी पारचो Mycobacterium leprae. हैला Mycobacterium leprae. Next. Which serological test is used for the diagnosis of the syphilis? Syphilis first of all एडा कोन एडा होची गोटे STD टा sexually transmitted disease टा गोटे बैक्टीरिया द्वारा कॉज होची. से बैक्टीरिया टा कोन बैक्टीरिया हैला ट्रिपोनेमा
ट्रिपोनेमा पैलिडम ठीक ट्रिपोनेमा पैलिडम द्वारा हमर सिफिलिस कॉज होची एसटीडी रा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर गोटे बीडीआरएल टेस्ट द्वारा एरा हमर स्प्रेड हे परिबा बीडीआरएल टेस्ट बीडीआरएल माने कोन फुल फॉर्म वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट बीडीआरएल टेस्ट द्वारा ये हमर टेस्टिंग करेंगे परिबा हैला नेक्स्ट The viral test is used for the diagnosis of tuberculosis, typhoid fever, syphilis, malaria. हमें ऊपर already discussion करी सारी चे, है ना? Already discussion करी सारी चे. Yes, Treponema pallidum. Yes, सागरिका. Very good. ठीक है. Viral test जोड़ा कि हमारा typhoid fever रा diagnosis में use होची. और typhoid fever हमारा किमित spread होची by Salmonella typhi through contaminated food and water. Contaminated food and water ये हमारा spreading करोज. Next, which of the following diseases is screened for using the Mantoux test? Tuberculosis, exposure, leprosy, tetanus, diphtheria. Salmonella typhi. Yes. A, yes. Tuberculosis, exposure. Next, which organism is responsible for the whooping cough or pertussis? Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenza और Streptococcus pneumoniae ये हमर निमोनिया कॉज करूची. निमोनिया कॉज करूची जोड़ा कि हमर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को से इन्फेक्शन करूची. Corynebacterium diphtheria कॉज करूची. आउ Bordetella pertussis कॉज करूची जोड़ा को कि हमर कॉमन सिम्पटम आर एसोसिएटेड हे होची कोन whooping cough. A. Next, diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheria, Clostridium diphtheria, Bacillus diphtheria, Streptococcus diphtheria. Diphtheria is caused by Corynebacterium. Genus टा होची तार Corynebacterium. Diphtheria तो हैला तार species टा. Corynebacterium होची तार कोन genus name टा. Next, which of the following best describes a carrier in the context of the infectious disease? Infectious disease जो infection टा बा जो disease टा गोटे person गोटे individual गोटे animal गोटे vector जे carry करिकी गोटे जगह आउ गोटे जगह को नेकी spread करउची ताकू हमें as a carrier बोली कहउची हैला ताकू हमें carrier बोली कहउची. तो a person immune to the disease नहीं, vaccinated individual नहीं, a vector that spreads the disease vector हमें एठी कहि परिबनी जे disease spread करउची काहे ना vector को निजे कोनोसी infection हो हैला. A person who harbors and transmits an infectious agent without any symptoms हैला एरा हे जिबा हमर कैरियर रो डेफिनेशन हैला एरा हे जिबा हमर कैरियर रो डेफिनेशन. नेक्स्ट, nosocomial infection are those acquired before hospital admission during the course of hospitalization through genetic transmission through vaccination. B, yes. During the course of hospitalization रो टाइम रे जो इन्फेक्शन दा हमर हेबार चांस होउची ताकू कुआ जाउची nosocomial infection. Which of the following is the primary mode of transmission of tuberculosis? Tuberculosis जेहेतु एटा गुटे हमर respiratory tract रो इन्फेक्शन दा ता माने सेटा हमर airborne droplet निहाती हमर airborne droplet द्वारा से हमर निहाती स्प्रेड करथुम. तो airborne droplet nuclei एटा होची तार mode of transmission हैला एटा होची तार mode of transmission. Yes सागरिका ठीक अछि. The causative organism of the scarlet fever is Streptococcus pyrogens सब एटा
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. कौन हबो causative organism for the scarlet fever जोटा कि पुणी अगेन हमर गोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ता Streptococcus pyogenes द्वारा ये हमर स्प्रेड होछि हैला ब्लैक एंड व्हाइट करबा ठीक अछि ओके नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ दैट हाँ तो Streptococcus pyogenes next which of the following best defines an antigen रे definition ता कोन antigen रे definition होछि antigen होछि highly specific आ गोटे पर्टिकुलर एंटीबॉडी पई बोली से स्पेसिफिक थाए आ एंटीजन रो अगेंस्ट रे जो एंटीबॉडी ता काम करछि से मानकर स्पेसिफिसिटी ता सबरो अधिक थाए एंड इट इज अ सब्सटेंस ऑफ इंड्यूसिंग अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस गोटे एंटीबॉडी से बाइंड करछि माने इम्यून सिस्टम को सी एक्टिवेट करछि आ सेरा हाईली स्पेसिफिक थाए ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ inducing a specific immune response. Here is the correct answer and is the correct explanation or the definition for the antigens. है ना? So with this, आजिरो सेशन आमर एडी सरुची ठीक तो आजिरो क्लास केमती लागिला कोन मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबो and we will see you next time with some other questions as well. ठीक अछि? So thank you so much everyone. जय जगन्नाथ.